I'll give you 10 minutes. Upload. तो ये जो प्रोसेस कंट्रोल है पूरा प्रोग्रामर मल्टी प्रोग्रामर जो है कंट्रोल यहाँ से करते हैं सर। दो लाइव रूम से सर, एक जो लाइव रूम वीडियो के लिए बन रहा है, ऑडियो के लिए बन रहा है सर। पूरा साउंड प्रूफिंग है सर, ग्लास रूम से मोबाइल। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आज स्वामी जी के सानिध्य में इस मल्टीमीडिया के उद्घाटन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिला। मैं समझता हूँ कि ये जो नई सुविधा यहाँ स्थापित हुई है उससे दूरस्थ विद्यार्थियों को
शिक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now I invite our college choir to invoke Lord Almighty. एकदन्तम् महाकायम् एकदन्तम् महाकायम् लम्बोदर गजाननम् विघ्ननाशकरम् देवम् विघ्ननाशकरम् देवम् हेरम्बम् प्रणमाम्यहम् हेरम्बम् प्रणमाम्यहम्। प्रदक्षिणपुराधीशम् वीरसिंहासनाधिपम् प्रदक्षिणपुराधीशम् वीरसिंहासनाधिपम् श्रीवीरशैवाब्धिचन्द्रम् शिवरात्रीश्वरम् भजे। श्रीवीरशैवाब्धिचन्द्रम् शिवरात्रीश्वरम् भजे। ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವದ ಬಲದಿಂದ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವದ ಬಲದಿಂದ ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ,
ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ನೋಡಯ್ಯ, ನೋಡಯ್ಯ. Now I request Vice Chancellor Dr. A.N. Santosh Kumar to welcome the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A very good evening to one and all present here. At the outset, I offer my most respectful pranams to the Suttur Guru Parampara. I submit my most respectful pranams to the lotus feet of His Holiness Jagat Guru Dr. Shri Shivaratri Rajendra Mahaswamiji, the founder president of JSS Mahavidya Pita and the visionary who established Sri Jayachamaraja College of Engineering 60 years ago. I offer my humble pranams to the lotus feet of His Holiness Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji, President JSS Mahavidya Pita and the Honorable Chancellor of JSS Science and Technology University, and seek His divine blessings. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to you all on the occasion of the inauguration of the Diamond Jubilee celebrations of Sri Jayachamrajendra College of Engineering, a constituent college of JSS Science and Technology University. Sri Jayachamraja College of Engineering, Mysuru, popularly known as SJCE, was established in 1963 by Jagadguru Dr. Sri Shivaratri Rajendra Mahaswamiji, the 23rd Pontiff of Suttur Sri Veerasimhasana Mahasamsthana Math, Suttur Kshetra. SJCE was the dream child of Jagadguru Dr. Sri Shivaratri Rajendra Mahaswamiji, started with the objective of providing quality engineering education to students in and around Mysore when opportunities were far and few. Under the progressive leadership of His Holiness Jagadguru Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji, SJC has proudly completed 60 years and is today a reputed and respected institution in the country committed to technical education. Starting with 3 branches of engineering and 120 students in the year 1963, SJCE has evolved as a major institution in the field of technical education, offering 14 undergraduate programs, 31 postgraduate programs, and PhD programs in basic to advanced research in engineering and technology. With the state-of-the-art industry-oriented laboratories, collaborations with industry, academic and research institutes at national and international levels, market-driven curriculum, quality faculty and staff, good infrastructure, excellent placements, opportunities for advanced learning and research, and equal opportunities in entrepreneurship and extracurricular activity, today SJCE is a sought-after choice for students from all over the country. SJCE Science and Technology Entrepreneurs Park, SJCE STEP, is one of the first centers to be established in India and is at the forefront of promoting entrepreneurship and incubation. It has been a remarkable journey to have reached 60 years of providing high-quality education and producing some of the most talented engineers in the world. As we celebrate this momentous occasion, I deem it a privilege to welcome our Honorable Chancellor, Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji, a great philanthropist and visionary committed to the welfare of people beyond caste, creed, and color. His legendary leadership and direction have taken this university and the constituent college to a higher level of quality and excellence. Honorable Chancellor, we are blessed to have your gracious presence on this occasion. Your Holiness, I profoundly welcome you to this inauguration of the Diamond Jubilee celebrations. It's a matter of great pride, pleasure and honor that His Excellency Sri Manoj Sinha Ji, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, is here with us today as our esteemed chief guest to inaugurate the Diamond Jubilee celebrations of Sri Jayachamrajendra College of Engineering and the JSS Multimedia Resource Center. His Excellency Sri Manoj Sinha Ji, born in Ghazipur in Uttar Pradesh, is a trained civil engineer with degrees of BTech
and M.Tech from IIT Varanasi and is a seasoned politician too. Prior to joining active politics, he was a member of the General Council, School of Planning. He has also been a member of the Committee on Energy and a member of the Committee on Government Assurances. His Excellency Sri Manoj Sinha Ji is a three-time member of the Parliament. His Excellency was elected to the Lok Sabha from Ghazipur constituency in Uttar Pradesh for 3 terms in 1996, 1999 and 2014. His Excellency was appointed as the Union Minister of State for Railways in 2014 and in 2016 was appointed as the Union Minister for State, independent charge of the Ministry of Communication. An agriculturist at the heart and a silent performer who consciously maintains a low profile, His Excellency Sri Manoj Sinha Ji has been amongst the best performing members of the Parliament of the 13th Lok Sabha. His Excellency was counted among the 7 most honest MPs in India and has set a rare example by utilizing his entire MP Local Area Development Fund for the welfare of the people of his constituency. He is recognized for his strong ability to connect with the masses, especially at the rural level, along with being a firm administrator. His Excellency Sri Manoj Sinha Ji took charge as the 2nd Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir on the 7th of August 2020. On behalf of JSS Mahavidya Peeta, JSS Science and Technology University, and Sri Jayachamaraja College of Engineering, I wholeheartedly welcome His Excellency Sri Manoj Sinha Ji, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, to the inauguration of the Diamond Jubilee celebrations of Sri Jayachamaraja College of Engineering. I take this opportunity to welcome Sri Venkat, an industrialist from Bangalore, who has accompanied His Excellency. Welcome you, sir. The Honorable Minister for Cooperation, Government of Karnataka, and District in charge Minister of Mysuru, Sri S.T. Somshekar, could not attend the function due to his preoccupation. I take this opportunity to welcome Sri S.T. Somshekar in his absence here. I also extend a warm welcome to the guest of honor, Sri L. Nagendra, a member of the Karnataka Legislative Assembly, for accepting our invitation and for being present here. I welcome you, sir. I take this opportunity to extend a hearty welcome to Dr. C.G. Betslormat, the Executive Secretary, JSS Mahavidya Peeta, to this function. I extend a warm welcome to Professor M.H. Dhananjaya, former Principal SJCE and Advisor, Technical Education Division of JSS Mahavidya Peeta. With the blessings of His Holiness Swamiji, Professor Dhananjaya, considered as the doyen of technical education in the country, has put SJCE on the national and international map with a single-minded devotion. I welcome you, sir. I extend a warm welcome to Dr. B. Suresh, Director, Technical Education Division, and Pro-Chancellor, JSS AHER, and Dr. S.B. Kiwade, Principal, Sri Jayachamaraja College of Engineering, to this inaugural function. I welcome the directors, secretaries, unit heads, and officers of JSS Mahavidya Peeta. I also welcome Sri Manjay Gowda, MLC, to this inaugural function. I welcome all the former principals, faculty and staff of SJCE to the inaugural function. I also extend a very warm welcome to my colleagues at the university and the Constituent College, students, parents, guests, alumni, heads of academic institutions, dignitaries from other organizations, members of the press and media, and all others who are present here. I once again welcome one and all to this inaugural function. Thank you. Now I request His Excellency along with His Holiness and all other dignitaries to inaugurate by lighting the lamp and to unveil the SJCE Diamond Jubilee logo.
I now request Professor M.H. Dhananjaya to kindly brief about the journey of SJCE. Pujya Swamiji, His Excellency Sri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, my distinguished colleagues, invitees, friends, it gives me immense pleasure to realize that SJCE is celebrating its Diamond Jubilee. I remember the early days of SJCE in its growth journey. I would like to mention here that the growth of SJCE is the result of hard work of many dedicated people. I recall how we involved ourselves in this great institution building process. The uniqueness of SJCE, according to me, is not merely the academic excellence and being relevant at all times in education, but also its involvement in social activities connected with technical education. SJCE has grown by leaps and bounds in its contribution to society. The SJCE had an opportunity to serve not only in India but also in other countries like Tanzania, Kenya, Uganda, etc. It has been working in close partnership with institutions in countries like UK, USA, Russia, France, Italy, and the World Bank, in addition to Australia and Malaysia. Here I would like to quote one of the projects which we had taken up under the World Bank, namely Integrated Rural Water Supply and Environmental Sanitation, called as IRWS and ES, wherein more than 1,000 villages in Karnataka were involved. This project involved survey, design, construction. Apart from overseeing the continuity, it was a great experience. There are many other technical social activities that we at SJCE involved ourselves in. These activities helped SJCE to get recognition as one of the prestigious institutions in the country. I must acknowledge here the great dedication and effort involved by my colleagues. I can name quite a few of them. However, I would like to mention that they were all very enthusiastic in involving themselves in the growth of JCE. SJCE in its growth had supported in setting up its sister concerns like JSS Polytechnic for Women, JSS Polytechnic for Differently Abled, and first of its kind in the country and the only institution in the state of Karnataka exclusively for the differently abled, facilitating the reach of the technical education to all. SJC will grow and tries to keep activities relevant to the society through the vehicle of technical education. I wish SJC success in the years to come in its efforts. I particularly mention here the guidance and support provided by His Holiness Jagadguru Dr. Shivaratri Rajendra Mahaswamiji and the present Pontiff, His Holiness Jagadguru Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji, without whom it was not possible for this phenomenal growth. Thank you. May I now request His Excellency Sri Manoj Sinha ji for his inaugural address. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.
His Holiness Jagat Guru Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswami Ji, Sri L. Nagendra Ji, Professor M.H. Dhananjay Sahab, Dr. C.G. Betsumat, Dr. B. Suresh, Professor A.N. Santosh Kumar, Professor S.B. Kirde, all the devotees associated with Sutur Mutt, faculty members of Sri Jai Chamrachandra College of Engineering and sister institutions, dear students, ladies and gentlemen, I am feeling truly blessed and obliged to be with all of you at this inaugural function of Diamond Jubilee celebration of SJCE. I bow to His Holiness Jagat Guru Sri Shivaratri Rajendra Mahaswami Ji, who blessed the mankind with His divinity and became the torch-bearer of the education in independent India. With his blessings, JSS Mahavidyapith emerged as a divine center, imparting both knowledge and India's core civilizational values to the students. For almost 7 decades, JSS Mahavidyapith has been in the forefront of setting high standards for education, rendering distinguished services to the society, and enriching personality of young generation with proper sanskaras. Today, with blessings of revered Jagat Guru Deshikendra Mahaswami Ji, JSS Mahavidyapith has become byword for value-based education with more than 300 institutions across the globe. Mahavidyapith is developing talents, having wisdom of history, culture and ethos of Bharatvarsh, and they are equally equipped, skilled to handle the challenges of 21st century and become integral part of the future workforce. I am confident that in the years and decades to come, JSS Mahavidyapith will grow from strength to strength, adopting all the new developments, innovations and technologies rooted in Indian ethos. Friends, in the last 8 years, we have seen the arrival on the world stage of a superpower India, the Bharatvarsh, that has resolved to regain its past glory and be the economic powerhouse and the driving force for all-round development of humanity. We are blessed to be born in India, the land which has produced the great scientists and saints. If you compare it with the rest of the world, surprisingly, you will not find a single country that was able to develop both scientific and spiritual aura. India is the only country which has been deeply concerned with the evolution of human consciousness as much as it has been for the new inventions. It has been deeply concerned to seek the truth and also be the truth. Our technological innovation journey has been as intense as our search for inner peace. And that is why I always believe that our spiritual heritage and our knowledge heritage is the real treasure. Last year, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji gave a clarion call to remove traces of colonial mindset and celebrate our roots, our heritage, with pride in this context. I was wondering what thoughts I can share with you all on this occasion. I have selected to share India prime mover of peace, prosperity and knowledge. भारतवर्ष शांति, समृद्धि और ज्ञान का वाहक है। इसी विषय पर मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। मित्रों, खोज भारतवर्ष की पहचान रही है। हमारे पूर्वज सदियों से ऐसी खोज के लिए प्यासे थे जो मानव समाज में
शांति और समृद्धि स्थापित कर सके। पुरातन काल से भारतवर्ष एकमात्र ऐसी भूमि है जहां हर एक नागरिक की खोज कंस्ट्रक्टिव थी, डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। चाहे हमारा चिंतन हो, ऋषि मुनियों की तपस्या हो, वैज्ञानिकों चिकित्साविदों की खोज हो, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की प्रतिभा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित रही है। आज भी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भारत पूरी विनम्रता से इस बात का प्रयास कर रहा है कि वैश्विक उथल पुथल से किस प्रकार से संसार के 8 बिलियन नागरिकों को बचाया जा सके। G20 की प्रेसिडेंसी मिलते ही वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संदेश से हमने स्पष्ट कहा है कि आज भी अपनी प्राचीन परंपरा को कायम रखते हुए हम इस धरती पर मौजूद हर एक नागरिक के कल्याण के बारे में चिंतित हैं। हम जब भी परिवार के बारे में सोचते हैं तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारा यही इतिहास रहा है। कई बार लोग कहते हैं ठीक है, हमारा इतिहास समृद्ध था, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा न सोचते हुए हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर हम भारत को मात्र इतिहास और भूगोल के रूप में देखेंगे तो बड़ी गलती करेंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने मानव चेतना के परम शिखर को प्राप्त किया है, और इसलिए आज भी जब विदेश से कोई पर्यटक, टूरिस्ट चिंतन मनन के लिए यहाँ आता है तो वो कहता है कि इस मिट्टी में कोई ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है। इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि जिस समय भारतवर्ष में उपनिषद, वेद की रचना हो रही थी, उस दौर में पूरा विश्व एक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। सभ्य समाज का सबसे पहला बीज हमारी इसी धरा पर, इसी मिट्टी में अंकुरित हुआ, और हम सभी को, खासकर नई पीढ़ी को, इस तथ्य पर गर्व करने की जरूरत है। जिस समय बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, आदि गुरु, शिवयोगी स्वामी जी, तमाम साधु संत महात्मा समाज की दिव्यता, उसकी चेतना को जागृत कर रहे थे, उस समय विश्व के अलग अलग हिस्सों के इतिहास के पन्ने ज्यादातर खाली मिलेंगे आपको। 10वीं शताब्दी पूर्व जब परम पूज्य महास्वामी जी ने सुत्तूर मठ की नींव रखी थी, उस समय भारत की ख्यात एक ऐसे दिव्य केंद्र के रूप में फैल रही थी जिसका समाज और उसकी ऊर्जा शांति और समृद्धि की खोज में था। उपनिषद के दौर का एक भी वैश्विक साहित्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इतनी गहनता से मानव चेतना के उस परम बिंदु को छुआ है। आज भी उस दौर की कोई ऐसी पुस्तक विश्व में नहीं मिली जिसकी साहित्यिक आध्यात्मिक विरासत इतनी समृद्ध हो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि सदियों से भारत एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य भारत का रहा है, कैसे परम शांति, आंतरिक एवं बाहरी समृद्धि के द्वारा समाज का कल्याण हो। उस दृष्टिकोण से देखें तो भारत एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जिसके प्राणों से हर इंसान के उत्थान की आकांक्षा हो, ऐसी अभिप्सा है। आज भी इंजीनियरिंग हो या मेडिकल कॉलेज हो, जब भी दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन आयोजित होते हैं, तब टीचर्स प्रार्थना करते हैं और विराट अस्तित्व से सहायता भी मांगते हैं। आज उनके विद्यार्थी की नई यात्रा शुरू हो रही है, एक नया सूत्रपात हो रहा है, इसलिए उसकी मदद करिए। यह संवेदनशीलता, संबंधों की गहराई इसलिए जीवंत है क्योंकि भारत सिर्फ इतिहास और भूगोल नहीं है, बल्कि इस दुनिया का हृदय स्थल है। यहाँ काफी विद्यार्थी भी हैं और मैं आज विद्यार्थियों से ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप से अलग हट करके कुछ बात करना चाहता हूं कि आखिर शिक्षा है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। और बहुत साधारण बात मैं करूंगा, व्यवहारिक बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी इसको सुनेंगे भी। और I can tell you there is an optimism, there is an air of hope
and there is an air of purpose in the air. And I congratulate both Param Pujya Swami Ji, Vice Chancellor and faculty members for this Diamond Jubilee celebration. One thing I want to say, today is the Diamond Jubilee celebration of this institution. Let us reflect for a moment. What is it that makes the day so special? We have gathered here today. Why has Pujya Swamiji is here? Why is Professor Dhananjay Kumar is here? In spite of their busy schedule, not only been present here, but जब मैं वहाँ से चल रहा था तो मैंने स्वामी जी से आज्ञा ली कि स्वामी जी कितना समय है मुझे। स्वामी जी ने कहा कि जितना समय आपको लगे आप बोलिए। तो मैं धृष्टता नहीं करूंगा, मैं समय की मर्यादा समझता हूं और इसलिए मैं छात्रों से, विद्यार्थियों से विशेष रूप से आज बात करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा का ध्येय क्या होता है, शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, क्यों आज हम सब इस संस्थान में उपस्थित हैं ऐसे अवसर पर। अगर सिर्फ औपचारिकता निभानी होती तो मुझे कश्मीर से यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। परम पूज्य स्वामी जी को, प्रोफेसर धनंजय कुमार और ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। एक दूसरे को बधाई दे करके कार्यक्रम पूरा हो सकता था। और विशेष रूप से मैं छात्रों से कह रहा हूँ कि यहाँ उपस्थित होने का गहरा कारण है। शिक्षा की परिभाषा क्या है और उस अंदर में यह जो शब्द है, इस कॉलेज की भूमिका क्या है, इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भूमिका क्या है, ये समझ लोगे तो सार्थक हो जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे कहीं ज्यादा महान लोगों ने, जिन्होंने भारत का निर्माण किया है, कई बार ये बात कह चुके हैं। शिक्षा की बड़ी सरल परिभाषा है, बहुत ही सरल, और ये मेरी व्यक्तिगत परिभाषा है, इसे मैंने खूब आजमाया है। मैं जैसा बताया गया, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूं। आई एम ए मैथमेटिशियन ऑल्सो, एंड वी कांट प्रोसीड इन मैथमेटिक्स until we define and then give examples. So I have taken the liberty to define education and illustrate that with few examples and then place it in the context of what this college is achieving and what it should achieve and will achieve. So there is just one simple definition of education. It's a journey of the self. ये जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है, एंड इट्स ए जर्नी ऑफ द इनर सेल्फ। अंतस की यात्रा है, अंतर्मन की यात्रा है। हमें अपने अंदर टटोलना है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, उसे मैं अंतर्ध्वनि कहता हूं। उस व्यक्ति की विशेष अंतर्ध्वनि को जब पहचान हो जाती है या पहचान होने लगती है कि उसकी पुकार क्या है, वह ध्वनि क्या है, और जब इस संसार में, इस दुनिया में उसके अनुकूल वो कदम बढ़ाकर चलने लगता है तो वह प्रशिक्षित होने लगता है। और ये जीवन पर्यंत की यात्रा है। कुछ बिरले लोग हैं, स्वामी जी जैसे महान पुरुष, जिनको हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष होते हैं, बिरले होते हैं। हमारे जैसे, आप जैसे लोग, साधारण लोग इस जीवन यात्रा, इस यात्रा में जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। दिन प्रतिदिन हम चाहते हैं कि गत दिनों से, पिछले दिनों से थोड़ा बेहतर हो सके, किया जा सके, इस ध्वनि को ठीक से पकड़ा जा सके और बेहतर रूप से पकड़ा जा सके, और उसके अनुकूल कदम भी बेहतर ढंग से रखा जा सके। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं, बहुत सरल, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यद्यपि स्वामी जी ने मुझे कहा है कि आप चाहो जितना समय ले लो, लेकिन मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूं। महात्मा गांधी आप सब नाम से परिचित हैं। बहुत कम आयु में, 8 वर्ष की आयु थी उनकी, उनको ध्वनि का ज्ञान हो गया 8 वर्ष की आयु में।
और ऐसे नहीं हुआ एकाएक कि रात को सो के उठे और सुबह उनको ज्ञान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देयर वॉज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। द वर्ल्ड अराउंड अस is full of stimuli. Remember this. I want students to understand that this whole world is a university. इसको मान के चलिए आप। हर एक अनुभव एजुकेशन होता है और एजुकेशन का अनुभव होता है। शिक्षा का ही ये अनुभव है। गांधी जी को कैसे आभास हुआ कि उनकी अंतर्ध्वनि क्या है? 8 वर्ष की आयु में स्कूल में पढ़ते थे। एक नाटक देखने गए थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस नाटक ने उनको इतना प्रभावित किया कि उनकी ध्वनि जाग गई। और जब घर आए तो शीशा के सामने उस नाटक के जितने भी डायलॉग्स थे उनको दोहराते थे और उस डायलॉग्स को दोहराते हुए उन्होंने शीशा के सामने स्वयं से प्रतिज्ञा की। इतना छोटा बालक प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, लेकिन जीवन पर्यंत मैं सत्य के साथ ही खड़ा रहूंगा। अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना और बापू ने प्रतिज्ञा किया। ये होती है अंतर्ध्वनि की पुकार, जिसको उन्होंने समझा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई किए। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही और अस्पृश्यता को हटाया। अनेक बातें कही जा सकती हैं, लेकिन सत्य की खोज और उसकी छत्र छाया में ही गांधी जी ने सब कुछ हासिल किया। गांधी जी सत्य की खोज में थे, उसके अधीन थे, उसके अनुकूल चलना चाहते थे, उसके अनुकूल आचरण करते थे और जीवन के हर पहलू की जांच भी उसी आधार पर करते थे। यही था उनका जीवन और कुछ नहीं था। कि जितनी चुनौतियां आईं, कई बार परीक्षा ली गई, लेकिन सत्य को जीवन में कभी नहीं त्यागा उन्होंने। तो महात्मा गांधी ने अंतर्ध्वनि को पहचान लिया और राष्ट्रपिता बन गए। एक और चीज मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं। कौन कहेगा कि गांधी जी एजुकेटेड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे? Who will have the temerity to say that Mahatma Gandhi was not an educated person? But did you know that he did not have a single university degree or qualification? This fact, I think, some people may surprise, but it's a truth. There are many of us who think that Mahatma Gandhi had a law degree. No, he did not. His only qualification was a high school diploma. He qualified to practice law. He did not have a law degree. He had no degree at all. Yes, just look at him. Just look at how educated he was. Father of the nation, Rashtrapita Mahatma Gandhi. So, let me also make it clear to you that do not only be indulging in this formal connection with a degree and what you think is education. Mark Twain very famously said, I did not allow my schooling to interfere with my education. Think about this. He did not allow his schooling to interfere with his education. कबीर, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। जब मैं पीछे आकलन कर रहा था तो 1000 से ज्यादा पीएचडी कबीर पर हो चुकी है। इतना गहरा प्रभाव है कबीर का भारत के दर्शन पर, साहित्य पर। और आप जानते हैं कबीर शिक्षित नहीं थे, इलिटरेट थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ही वॉज इलिटरेट, उनको लिखना भी नहीं आता था, पर उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना, पकड़ा उसको। वे ईश्वर की खोज में थे और उसी में लीन हो गए। हर तरह की कीमत चुकाई उन्होंने। इतनी पीएचडी हम लोग करते हैं कबीर पर, एक अनपढ़ आदमी पर। अंतर्ध्वनि पहचाना उन्होंने और कबीर कबीर हो गए। तेंदुलकर, सब लोग नाम जानते हैं तेंदुलकर का। 10 वर्ष की आयु में तेंदुलकर, पहले वो पिंग पोंग खेलते थे,
उसमें ज़्यादा रुचि थी उनकी। अचानक एक दिन उनको अपने अंतर्ध्वनि का ज्ञान हो गया, उनका वास्ता क्रिकेट से हो गया। ध्वनि जाग गई और उन्होंने तय किया कि हमें क्रिकेट खेलना है, और उस दिन से क्रिकेट में लीन हो गए। प्रतिदिन घंटों प्रैक्टिस करते थे। शनिवार हो, रविवार हो, होली हो, दशहरा हो, कोई परवाह नहीं की उन्होंने। उनकी भी परीक्षा ली गई, हर तरह से ली गई। बहुत साधारण घर से थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन कभी भी क्रिकेट को नहीं त्यागा। कठिनाइयां बहुत आईं, यहां तक कि एक वक्त था उनके जीवन में उनके पास एक ही पतलून थी। स्कूल भी पहन करके जाते थे, और जब घर आते थे तो माँ उसी पतलून को धोती थी और भीगी पतलून पहन करके ही फील्ड पर जाकर के बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। इसको कहते हैं समर्पित कर देना अपने आप को। ध्वनि की खोज में समर्पित कर दिया तेंदुलकर ने, तभी प्रशिक्षित हुए। और प्रशिक्षित ही नहीं हुए, भारत रत्न की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। आप जानते हैं तेंदुलकर के पास भी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनका आचरण देख लीजिए। लुक एट द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। भारत रत्न है, लेकिन हैज ही एवर सेड एनीथिंग दैट इज डिसऑनरेबल or controversial or hateful? No. He conducts himself like a thoroughly educated man because he has discovered, he has anchored to his drum beat. I call it drum beat within. तो शिक्षा उसी को कहते हैं जो अनुभव के आधार पर आपको आपकी अंतर्ध्वनि से परिचित करा दे। So what is the role of this college or this technical university? What should this university do? It must enable each one of you students to somehow begin to understand your inner self. What is your drum beat? To understand what it says, and then start adhering to it, start practicing it. इसी को प्रार्थना भी कहते हैं और इसी को धर्म निभाना भी कहते हैं। धर्म की परिभाषा उस संकीर्ण दायरे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो रिलीजन है। मैं समझता हूं कि धर्म को अगर अंग्रेजी में हम कहें तो धर्मा इज दैट विच बाइंड्स, जो बांधता है हम सबको, वही धर्म है। तेंदुलकर बंधे थे क्रिकेट से, अमिताभ बच्चन बंधे थे एक्टिंग से, महात्मा गांधी बंधे थे सत्य से, उसी तरह से रामानुजम बंधे थे गणित से। अनेक लोगों ने रामानुजम का नाम सुना होगा। उनके पास भी कोई डिग्री नहीं थी, स्कूल भी पास नहीं कर पाए थे, 10th क्लास में पढ़े, पास नहीं कर सके, कोई डिग्री नहीं मिली, लेकिन गणित को उन्होंने कभी नहीं त्यागा, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना और बचपन से गणित से जुड़े तो जीवन पर्यंत गणित से जुड़े रह गए। तो इस कॉलेज को क्या करना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए और क्या प्रधान ध्येय होना चाहिए, और उपलब्धियां कैसे हासिल हो सकती हैं? यू शुड बी गिवन ए प्लेटफॉर्म दैट अलाउज ईच इंडिविजुअल थ्रू हिज और हर एक्सपीरियंसेस टू बिगिन टू डिस्कवर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड व्हेन यू स्टार्ट डिस्कवरिंग, then the university should allow you to start practicing the belief. और मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि आज ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, और यहां स्वामी जी इस बात को पूरी तरह से समझते हैं, मंच पर बैठे हुए लोग समझते हैं, और इसीलिए किस तरह से कोऑपरेशन करके इनलाइटेंड एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए। मैं आशावादी और उम्मीद रखता हूं कि यहां इस संस्थान ने बहुत लोगों का भला किया है और आने वाले समय में भी बहुत सारे लोगों का भला होगा। और इसलिए आज यहां उपस्थित मैं व्यक्तिगत रूप से हूं कि मैं भी भागीदार बन सकूं, किसी तरह से मैं भी सीखूं, मेरा भी उद्धार हो जाए। कुछ सीखने से ही कबीर बने, महात्मा गांधी बने, और उन लोगों ने हमारे लिए बहुत मंत्र छोड़ा है। बड़े सरल मूल मंत्र हैं, इसको समझ जाइए आप।
और इसमें अध्यापकों का भी मैं सहयोग चाहूंगा। गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में एक बड़ी गहरी और सरल बात कही थी, सटीक बात कही थी। और याद रखिएगा एक बात, गांधी जी कभी ऐसी वैसी बात नहीं करते थे। He would never utter a word which was to be said lightly, and he would never utter it unless he had experimented with it and made his own discoveries and inferences. That's why his autobiography is called Experiments with Truth. तो शिक्षा के संबंध में गांधी जी को अधिकार क्या था? कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब उनके पास डिग्री नहीं थी तो ये अधिकार उनको किसने मिला? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब दक्षिण अफ्रीका में थे बापू, तो वहां भी एक स्कूल उन्होंने स्थापित किया। गहरे रूप से उस स्कूल के संचालन से जुड़े थे, बहुत अच्छे से गहराई से उस स्कूल को चलाया, खुद भी सीखा उन्होंने उससे बहुत कुछ, और उसके बारे में काफी लिखा है गांधी ने। भारत आए तो एक विश्वविद्यालय कायम किया, गुजरात विद्यापीठ, जो आज भी एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है। इट्स अ फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी। देन he went to Varda and he set up a polytechnic for women. And the governing body of that polytechnic were India's foremost scientists, Jagdish Chandra Bose, C.V. Raman, all of them were in the governing body. कई लोग कहते हैं कि गांधी साइंस के खिलाफ थे, टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। Don't believe these things. Discover for yourself his greatness, and that will help you. So what did Gandhiji say about education? After so many experiments, he said, in education, what you do with your hands will enter your heart. जो हाथ से आप करते हैं, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी, वही आपके हृदय तक पहुंचता है। मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी प्राचीन काल से भारत में हम सब इसका अनुभव करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। व्हाट डज इट से? नॉलेज विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। भारत इस बात को गहराई से अनादिकाल से जानता था। इफ यू लुक एट ऑल आवर उपनिषद्स, दे टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम। एक ऋग छंदयोग उपनिषद में एक जिक्र आता है एक पात्र का, ऋग। He was a potter. Rig was a potter. He had no qualification, but he was so wise, so educated, and these are historic tales. Don't take them to be just tales. These are tales of history. Rig के पास उस समय के राजा तक आते थे, सीखने के लिए आते थे। तो एक अनपढ़ व्यक्ति इतना प्रशिक्षित था कि राजा को आना पड़ता था उसके लिए। तो मैं क्या चाहूंगा? लेट दैट हैपन। लेट द डोर्स एंड विंडोज ऑफ दिस कॉलेज बी ओपन एंड लेट देयर बी क्रॉस करेंट्स बैक एंड फोर्थ ऑफ नॉलेज, enlightenment and education, which is what this institution is already doing, which you are already embarking on. And I invite you because other universities are yet slow to the task. So this is the use of hands. ध्यान से समझिए इसको। सारा ज्ञान बेकार है अगर उसका प्रयोग करना हम नहीं जानते। और इसलिए ईसा मसीह 12 वर्ष की आयु तक अप्रेंटिस किया उन्होंने। ही वॉज अप्रेंटिस टू हिज फादर एज ए कारपेंटर। हाथों के प्रयोग से कारपेंटरी करते थे। पैगंबर साहब चरवाहा थे, मत भूलिएगा कभी इसको। गुरु नानक जो भी उनके साथ जाता था उनका शिष्य बनता था। गुरु नानक अनिवार्य कर देते थे कि उनके साथ चलो, खेत पर काम करो। न्यूटन गिफ्टेड हाथों का प्रयोग था उनके पास। आइजक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, आइजक न्यूटन। उनकी सारी जो डिस्कवरीज है लाइट की, इनवर्स स्क्वायर लॉ केम टू हिम थ्रू लाइट। और कैसे अपने हाथों से उन्होंने यंत्र बनाए, इनोवेशन किया,
और उन यंत्रों के आधार पर इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइट को समझा, फिर तुक्का लगाया कि ग्रेविटी भी इसी तरह फैलती है लाइट की तरह। He made an educated guess that gravity also spreads like light in every direction in exactly the same way, guessed the inverse square law also for gravity, and then mathematically proved that that is how the law of gravitation. So, ये हाथों के प्रयोग से ही कर पाए थे न्यूटन। माइकल फैराडे दूसरी क्लास से आगे नहीं पढ़े, लेकिन माइकल फैराडे भगवान की कृपा थी, हाथ था, हाथ को पहचाना था। और कबीर ने तो कहा भी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। फैराडे पर भी ईश्वर का हाथ था। गरीबी में इतना बुरा हाल था कि उनके पिताजी ने कहा कि कहीं दुकान पर लगा देते हैं, अप्रेंटिस करे, 2 पैसा कमाएगा तो भोजन मिलेगा। और संयोग से बुक बाइंडिंग शॉप पर उनको लगा दिया उनके पिताजी ने। जमाना दूसरा था, आज का तकनीकी युग नहीं था। हर पन्ने को ठीक से पढ़ना होता था, सटाना होता था उसे, और इस काम में वो इतने निपुण हो गए कि पन्ना सटाते भी थे और पढ़ते भी थे। और पढ़ते पढ़ते विज्ञान की जिज्ञासा उनकी इतनी बढ़ गई, उनकी अंतर्ध्वनि उन्हें पुकारने लगी कि विज्ञान से जुड़ो। एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट of his age and one of the greatest scientists of the world forever, and he was only second standard pass. इसलिए हाथों का प्रयोग करो, अवश्य करो, नॉलेज को प्रैक्टिस में लाओ। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 100 वर्ष पहले कहते हैं, he laments that education in India has been confined to the 4 walls of the classrooms and the blackboard, and it seems to have no more connection with the world. We must go back to the way India was. And why do I say that? Because it served India well. This business of making education and the real world connected so that knowledge was in action and action gave rise to knowledge. Knowledge gave rise to action and action gave rise to knowledge. And the second rule, transdisciplinary. Please understand, subjects cannot and should not be learnt in isolation. If Newton was good in mathematics, he was just as good at physics. He was just as good at the use of his hands. He was also very good at composing. He was a great communicator. So you need to have these skills. You cannot do this by just lying in bed. आइंस्टाइन, आप सबने नाम सुना है उनका, जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया। सब्जेक्ट इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए गिफ्टेड हैंड्स-ऑन experimentalist. Did you know this Einstein? What did he do? He invented the world's first modern automatic camera. Can you believe that? He was so good with his hands, he also invented the world's first modern safe refrigerator. बहुत कम लोग जानते हैं। और कहाँ से आइडिया आया उनको? उनके फादर, he used to run an electromagnetic goods factory. Father fell ill. Einstein had already got a PhD in physics, but because his father was ill, he decided to manage the factory. And he managed it so well that he almost gave up his career in physics. So he was a practical man. He never said, no, I have a PhD in physics और मैं ये फैक्ट्री नहीं देखूंगा, इस फ्लोर शॉप में नहीं बैठूंगा. And he fixed electromagnets, and through that his ideas on gravitation evolved. Look at Gregor Mendel. ये बहुत बड़ा उदाहरण है मेंडल का. आज अगर पूरी दुनिया में क्रांति आई है
अगर आज हम कोरोना वायरस पर विजय पा सकें तो इसका मूल कारण हमने वैक्सीन डेवलप की और उसमें जेनेटिक्स का प्रयोग किया। इसके पहले वैक्सीन में जेनेटिक्स का प्रयोग नहीं होता था। वी यूज टू फाइंड अ वायरस एंड वीकन इट, फिर उसको लगाते थे, कुछ हद तक सफलता मिलती थी, समय लगता था 5 साल 7 साल वैक्सीन बनाने में, लेकिन ये जो आरएनए वैक्सीन आई है, जिन्होंने थाम दिया है कोरोना की रफ्तार को, उसकी प्रगति को, पूरी दुनिया को बचाने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की है, all of them have been invented through genetics. Who invented genetics? Mendel. And how did he do that? I want the students to understand genetics. ये जो लॉज हैं मेंडल ने जो डिस्कवर किए हैं, उसका मूल कारण क्या है? He was good at botany, he was good at mathematics, and he was good at gardening also. अपने हाथों से हजारों पौधे लगाते थे, उनकी गणना करते थे, डेटा में भी निपुण थे, काम करते थे, और 2 वर्षों में उन्होंने जेनेटिक्स को समझा, जीन्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं इस बात को उन्होंने समझा, और उससे पूरी दुनिया में जो क्रांति आई है, इट्स नॉट जस्ट द वैक्सीन्स, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द होल वर्ल्ड. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेक योर एजुकेशन प्रैक्टिकल. और अब तीसरी बात कह के खत्म करूंगा. थर्ड थिंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. हम लोग आइसोलेशन में पढ़ने लगे. बगल का बच्चा हमसे कुछ ना सीख ले, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसके नंबर मुझसे ज्यादा आ जाएंगे. यूनिवर्सिटीज नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. इतना हम उलझे हैं नंबरों में, इतना नंबर आ जाए, ज्ञान की बात ही नहीं हो रही है. नंबर, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं काम नहीं आते. जितने लोगों को मैंने देखा है जो जीवन में सफल हुए हैं, ऑल ऑफ देम हैव हार्डली केयर्ड फॉर व्हाट मार्क्स. Get good marks, fine. They don't get good marks, fine. Do what you believe in by discovering your drumbeat and God will listen. फिर ईश्वर बंध जाते हैं. हमारे पुराणों में बड़ी बेहतरीन कथा है. मैं धार्मिक दृष्टिकोण से इस बात को नहीं कह रहा हूं. एक कसाई था, वो मानता था कि उसका धर्म है कसाई. रोज निष्ठा से, लगन से वो अपना धर्म निभाता था. इतनी निष्ठा से कि अंत में नारायण स्वयं अवतार लिए और उन्होंने उसका उद्धार किया, उसको पार कर दिया. हम लोग तो भटक रहे हैं, लटके हुए हैं अहंकार में कि हमारे पास ये डिग्री है, हमको ईश्वर कैसे मिलेंगे. उसको मिले और पार हो गया वो. क्यों? क्योंकि उसने अपना धर्म निष्ठा से निभाया. ये प्रार्थना मान के चला, इसे प्रार्थना मानकर चला. जो आप उस स्वधर्म को पहचानेगा, उसको निभाएगा. मैं कहना चाहता हूं कि यही साधन है, इसी से आप सिद्ध होंगे. जैसे योगी की यात्रा होती है, उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि अपने धर्म का निर्वहन अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे. और याद रखिए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत नहीं है. 5, 6, 7, 8 लोग किसी समाज की समस्या को चुने, उससे जुड़े. ये मत सोचिएगा मुझे पूरे समाज का उद्धार करना है, आज मैं सब कुछ कर लूंगा. स्टार्ट मॉडेस्टली, छोटी छोटी चीजें लीजिए. इतने प्रयोग आज हो रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में. मैं समझता हूं कि उससे हमें समझने की जरूरत है. और इसमें यही बात तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी नई जनरेशन को एक नई गिफ्ट दी है. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट से इतना लाभ होता है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने पहले कहा कि कॉम्पिटिटिव मत बनिए, नंबर के पीछे मत मरिए. मैं तो कहूंगा कि क्रांति आ सकती है, नहीं तो पूरा देश आज एग्जामिनेशन में ही उलझा हुआ है. रोज एक परीक्षा होती है, रोज खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, कहीं पेपर टाइम से नहीं पहुंचा,
रोज कुछ न कुछ नाटक हो रहा है। किस लिए? एक रटा हुआ एग्जाम, चाहे आईआईटी का हो, मेडिकल का हो, सीयूईटी का हो, हम सभी उसी में उलझे हुए हैं। उससे बाहर आने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं ये विश्वविद्यालय इससे बाहर निकलेगा और जो एनईपी चाहती है उस दिशा में काम करेगा। समाज की चुनौतियों, आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता है। हैंड बेस्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग कीजिए, परंतु कंपटीशन से बाहर आइए। बी हम्बल, नॉलेज तभी आती है जब घमंड, प्राइड चला जाता है। मस्तिष्क में जब तक घमंड रहेगा जगह नहीं बनेगी। और मैं इसीलिए तो कबीरदास ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। इस अहंकार से बचने की जरूरत है। अहंकार विहीन जो बनेगा, ज्ञान की प्राप्ति उसी को होगी। और जिस चीज में आपकी आस्था है उसे धर्म मानकर उस रास्ते पर चलिए, वो मजबूर होकर आएगा और वही उद्धार करेगा। सो डू व्हाट एंड माई फाइनल थिंग, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बातें भी नहीं है। ये महात्मा गांधी ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, ये डार्विन ने कहा, न्यूटन ने कहा, मेंडल ने कहा, ईसा मसीह, पैगंबर साहब, गुरु नानक देव, सबने कहा राष्ट्र का हित करो। पहले भारतवासी बहुत ऐसा काम करते थे। मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा और मुश्किल से अब मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। ज्यादा हो रहा तो मैं बंद कर दूं। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, मेंडल, एंगस मेंडल उनका नाम था, एंगस मेडिसन। और उसने बड़ी मॉन्यूमेंटल स्टडी की, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई रिक्वेस्ट यू पे अटेंशन टू दिस। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंगस मेडिसन. It's a monumental study, and till today, no one has disputed it. It's based on data from the 1st century AD till the end of the 17th to beginning of the 18th century. पूरा डेटा के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया. And what does he see? What does he say? पूरे सदियों के लिए 1st century से लेकर 18वीं सेंचुरी तक इंडिया डोमिनेटेड ग्लोबल जीडीपी. पूरी दुनिया में हम सबसे आगे थे. कारण क्या था? बिकॉज इंडिया वॉज ए नॉलेज इकोनॉमी. आज बहुत बात हो रही है इसकी, और इसके लिए भी 2 ही उदाहरण देकर मैं खत्म करूंगा. उस काल में यूरोप के पानी के जहाज अपना रास्ता नहीं खोज पाते थे, भटक जाते थे, नष्ट हो जाते थे. और उस समय आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कह रहे हैं कि कोई विज्ञान के पास विकल्प नहीं है टू फाइंड पोजीशन एट सी. दिस इज आइजैक न्यूटन टेलिंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट. उस युग में कहीं 100 वर्ष पहले से भारत के पानी के जहाज समुद्री रास्ता तय कर पाते थे. दूर अफ्रीका से भी आगे निकल जाते थे और दूसरी तरफ भी जाते थे, क्योंकि गणित के आधार पर हमारे पास एक यंत्र था, and it was based on logarithm scale coming out of knowledge institutions of India, which allowed our ships to find latitude at sea hundreds of years before Newton. प्रमाण और देता हूं. सामान्य रूप से थोड़ा हमारे यहां इतिहासकारों ने पता नहीं किस वजह से इन बातों को छुपाया या नहीं लिखा. मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो शिक्षण संस्थान है वो जरूर इन बातों पर ध्यान देगा. सो लेट मी टेल यू, आई हैव चेक्ड दिस फैक्ट. हाउ डिड आई लर्न अबाउट इट? फ्रॉम ए हिस्टोरियन इन हार्वर्ड, देन ए डिस्टिंग्विश्ड हिस्टोरियन इन पुर्तगाल. व्हाट? द फैक्ट इज जस्ट दिस: वास्को डिगामा डिड नॉट डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया. वो तो हम भारतीय लोग कब का खोज रखे थे, कहां कहां चले जाते थे. मैंने बताया आपको, साउथ अफ्रीका के आगे चले जाते थे, और इसके प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है.
छोटा सा द्वीप है मेडागास्कर, उसका नाम सुक्रोटा भी है। संस्कृत का नाम था सुखदंत द्वीप, डिस्टार्ट होके वो सुकोटा हो गया। उसकी गुफाओं की दीवारों में कभी जाइए, देखिए, भारत के नाविक वहां गए। सेलर्स, they have been scribed on the walls in Pali, Brahmi, Sanskrit, dating back to the time of Jesus Christ. Their adventures on their sailing from India and stopping there for supplies and going beyond. तो भारत तो ये सब तब खोज चुका था। कैसे खोजा? क्योंकि हमारे जो ज्ञान और विज्ञान की संस्थाएं थीं, उन्होंने गणित का समाज के हित में उपयोग किया। ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे यहां पता नहीं कैसे इसे छुपाया गया। प्लिनी प्री क्राइस्ट रोमन हिस्टोरियन थे, लिखते हैं, इंडियन शिप्स कम हियर एंड टेक अवे ऑल आवर गोल्ड। वो कह रहे हैं कि भारतीय पानी के जहाज आते थे और हमारा पूरा सोना लेके चले जाते थे। तो भारतीय चुराते तो थे नहीं, बिकॉज वी यूज टू कम देयर laden with produces from India, and they were so accurate, they would come and go back safe and sound. और भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए हम सोने की चिड़िया बने। बहुत कम लोग जानते हैं, ईसा मसीह से कई सौ वर्ष पहले केवल प्लास्टिक सर्जरी नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी का भी आविष्कार हमारे देश में हुआ था। कई लोग कहेंगे कि हवा में है, ऐसी चिकित्सा, ऐसी शल्य क्रिया कब थी यहाँ पर, ऐसे यंत्र कब बने इस देश में? मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में नहीं। ये सारी आयुर्वेद की पुस्तकें मुझे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वहां मिली। और वो क्या कहती है पुस्तक? भारत के आयुर्वेद की पुस्तकों का अनुवाद किया उन्होंने, और जिसमें वो बताते हैं कि ऐसे सूक्ष्म यंत्र कैटरेक्ट सर्जरी के लिए ये भारत ने बनाए, भारत ने आविष्कार किया, और उसका निर्यात होता था। हमारे यहाँ वुड जी स्टील का आविष्कार हुआ, भारत में वुड जी स्टील का आविष्कार ईसा मसीह के काफी पहले कर लिया गया था, और वो एक्सपोर्ट होता था। यहां तक कि एक ऐतिहासिक तथ्य आपको बताना चाहता हूं। जब सिकंदर यहां आए, ये इतिहास के लोग नहीं बताएंगे, आपको माफ कीजिएगा, मैं इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन इतना समझता हूं, जब सिकंदर आए तो ब्यास नदी पार नहीं कर पाए। कारण जानते हैं क्या? क्यों नहीं पार किया उन्होंने? उनके दो जासूस थे, और उन जासूसों को उन्होंने लगाया था कि जाकर के उधर की तैयारी देखो मगध सेना की। एंड दे केम बैक एंड टोल्ड देम दैट दे हैव नेवर सीन an army so vast and so enthusiastic to fight with you. There were thousands of elephants, thousands of horses, and thousands of foot soldiers, all eagerly waiting to give you battle. होश उड़ गया सिकंदर का, वहां से मनोबल टूट गया। सिकंदर लौट गए, ब्यास नदी पार नहीं किया उन्होंने। मगध की सेना मैंने जिक्र किया, जब वो लौट रहे थे, मनोबल उनका टूटा हुआ था, तो पोरस पुरराज उनको मिल गए, और वहीं पोरस से उनकी दोस्ती हुई, और पुरराज ने उन्हें कुछ गिफ्ट किया, भेंट किया, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुए। और जानते हैं वो गिफ्ट क्या था, वो भेंट क्या थी? He gave him ignots, large collection of ignots of wood steel. वो क्यों खुश हो गए? क्योंकि इसी स्टील से तलवार बनती थी। दुनिया के देशों में जहां भी सबसे अच्छी तलवार बनती थी, उसका स्टील भारत से जाता था, और भारत ही एक्सपोर्ट करता था, और बदले में सोना लाता था। ये हमारे ज्ञान और विज्ञान की संस्थाओं ने खोजा था। दिस इज वाई वी वर नॉलेज इकोनॉमी। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ नॉलेज इकोनॉमी? 2012 में एक अध्ययन हुआ, और बड़ी गहरी स्टडी है ये, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के बाद जो जानकारी आई,
उस कैंपस को देखेंगे आप, उसके इर्द गिर्द जो स्टार्टअप्स और जो कंपनी चलती हैं, जानते हैं उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वहां की जीडीपी में क्या है? $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, जस्ट वन यूनिवर्सिटी। कोरोना के दौरान मेरे एक मित्र ने मुझे बताया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से जुड़े हुए हैं, वहां प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन ने $6 बिलियन की वृद्धि की है कोरोना के दौरान ह्यूस्टन की इकोनॉमी में। ये होता है नॉलेज इकोनॉमी का पावर, ये होती है नॉलेज इकोनॉमी की ताकत। अब हमको सोचना चाहिए कि हमारी संस्थाएं तो सिर्फ नोट्स देती हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती हैं, अब वर्चुअल मोड और कंप्यूटर पर भी पढ़ाने लगे हैं लोग। बच्चा किस काम का बनेगा ये हम सोचते हैं या नहीं? विद्यार्थी की सोचेंगे किस लायक बनेगा, उसको कितना आता है, और हर एक व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो रामानुजम बन जाए, गणितज्ञ हो जाए। हिंदी पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र बन जाए। व्यवहारिक ज्ञान वो सीखे, मुझे लगता है इसकी कोशिश हम नहीं करते हैं। भारत में साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आता है, मैक्सिमम इजराइल से और कुछ चाइना से आता है, बाहर के देशों से आता है, और हम गणित पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को रामानुजम बनाना चाहते हैं, और करोड़ों रुपया देश का बर्बाद हो जाता है। और उसके पीछे बहुत सिंपल अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो गणित हाई स्कूल लेवल की है, जो मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल की है। अगर वही हम पढ़ावें कोडिंग के आधार पर, देश करोड़ों रुपया कमा सकता है। जब दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गणित को आईटी से जोड़िए, समाज की चुनौती से विद्यार्थी जुड़े, तब लाभ होगा भारत का। भारत तब नॉलेज इकॉनमी बन पाएगा। मैंने ज्यादा वक्त लिया, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में गुरु को ही सर्वोपरि माना जाता है, और जिस दिन सद्गुरु मिल गए उस दिन बाकी किसी उपाय की जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस स्थान पर आने का अवसर मिला है। उर्दू की एक पंक्ति है कि तूफान उठा दिए हैं, तूफान उठा दिए हैं जब इश्क ने हौसले किए। इंसान के अंदर जब हौसला आता है उस दिन गुरु के प्रसाद से उसके अंदर नई प्रज्ञा, नई चेतना का जन्म होता है। मेरी कामना है पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सदगुरु की अखंड धारा देश का और समाज का उद्धार करती रहे। फिर से मैं डायमंड जुबली की हार्दिक बधाई देते हुए, और आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए साधुवाद देते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for your inspiring words. I now request His Holiness Jagadguru Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji to bestow his blessings on this special occasion. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्भक्तजनसन्दोह कष्टसञ्चयनाशकं कामकालभयातीतं शिवरात्रीश्वरं भजे।
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಘನತೆವೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಮಹಾಜನರೇ, ಮಾತೆಯರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಅನುಭವ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಶ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ಮೌಲಿಕವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಮೊದಲುಗೊಂಡ ಅನೇಕರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂತನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು G20 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉದಾರ ಚರಿತಾನಂತೂ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಒನ್ ಅರ್ತ್, ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಭಿಲಾಷೆ ಹೇಗಿದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬಿಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಆದರೆ IITಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯೋಗ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿಯವರನ್ನು JSS AHERನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ, ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಭವನದಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಮನೋಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹದ್ದು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ದೆನ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿ ಟು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬಿಲಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಠ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿಗುರುಗಳದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡ್ತೀರಿ.
ಆದಿಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶಿವಗಳ 1050ನೇ ಜಯಂತಿ ಆದಾಗ ಆ ಸ್ಟಾಂಪನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿಯವರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಂಪನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿಯವರೇ ಅಂತನ್ನೋದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆದಿಗುರುಗಳದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಸ್ಟಾಂಪ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿಯವರದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಮನುಷ್ಯ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥವರು ಧನಂಜಯ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪುನಃ ಅನೇಕ ಜನರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಉದಾಹರಣೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿವಮಂತ್ರ ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳು, ಮಂತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾದವರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಈಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಓದೋದಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾನು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇರುವ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸನ ವಸತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕರುಣಾಮಯ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಥರ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆದದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಉರಿಸಿದರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ರೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ರೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಊಟದಲ್ಲೇ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೂ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂತಂದರೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾದರಗಳಿದ್ದಂತಹದ್ದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಒತ್ತಾಸೆ ಮೇಲೆ, ಇದು ಹಿಂದೆ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದೇ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರದ ಎದುರುಗಡೆ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಧನಂಜಯ ಅವರು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಿದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದ. ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಂಡೆ ಇತ್ತು. ಆ ಬಂಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ, ಕಲ್ಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ನು ಬಂದು ಶ್ರೀಮಂತನ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳ್ದ, ಈ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ದೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ, ಈ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ನು ದಿವಸ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ, ಇವನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ನು ಕೇಳೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತಂದ. ಅವನು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋದ. ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಬಂದು ಕರೆದ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂದ. ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗುಮಾನ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಅವ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆದ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಅವನು.
ಏನು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಇದೊಂದು ವಿಗ್ರಹ, ಒಂದು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದು ಅಂತಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲು, ಅದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಯಿತು. ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇತ್ತು, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಅರಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು 60 ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಒಬ್ಬರು ಕುಲಪತಿ, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥವನು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಕ ಯಾವುದೆಂದು ಬೆಸೆಗಂಡನಾದರೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಕಾಯಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದು, ಈ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾಜಿ is not new to Sri Suttur much. He was kind enough to attend a couple of our programs earlier when he was Union Minister. A rare breed of politician who always maintained a very low profile and worked silently. He was known as the best performing member of the Parliament. An agriculturist by heart, he chose politics despite a prestigious technical degree from IIT to his credit, and struck an undying bond with the rural masses. His technical knowledge, coupled with his intense commitment to the cause of the country, led to a new chapter in public life. An astute and honest politician, proved his innate ability in whatever possibility entrusted to him by his party. Today, his prudent leadership has brought back normalcy to Jammu and Kashmir, which is reverting to its old glory of the 1960s. Shri Sinhaji appealed as soon as he assumed his new assignment in J&K to educationists and industrialists to participate in rebuilding Jammu and Kashmir by opening the institutions and industries. During the Jayanti celebration of His Holiness Jagadguru Shivaratri Rajendra Mahaswamiji, while inaugurating an online, he invited JSS Mahavidyapita to make its footprint in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Thus, our presence in Jammu and Kashmir began at its behest, and the JSS College of Pharmacy is now established at Vijaypur in Jammu. Shri Sinhaji is with us today in the auspicious event. His presence is not only reassuring but also inspiring to all of us. JSS Mahavidyapita is profusely indebted to him for the gesture. May God bless him with the strength and vigor to accomplish what he is set to do. We wish him all the success. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು, ಬೆಟ್ಸೂರ್ ಮಠ್ ಅವರು, ಕಿವಾಡಿಯವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜೇಗೌಡರು, ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥವರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ,
ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೆನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವೆಂಕಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಗಂಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯೋಪೇತೇಶವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಶುಭ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ತೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ 4 ಮಾತು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. May I now request His Holiness to felicitate His Excellency Sri Manoj Sinha ji. I now request His Holiness to felicitate Mr. Nagendra, MLA, Chamaraja constituency. I now request His Holiness to felicitate Professor M.H. Dhanachaya. I now request Mr. Venkat, industrialist from Bangalore, who accompanied His Excellency, to come onto the stage to receive felicitation from His Holiness. Mr. Venkat, please.
Now I request Mr. Rajshekhar to come onto the stage to receive the felicitation from His Holiness. Request Manjay Gowda, MLC, to receive the felicitation from His Holiness. I now request Professor S.B. Kiwade, Principal, to propose vote of thanks. A very good evening to one and all. My respectful pranams to His Holiness Jagat Guru Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji and His Excellency Sri Manoj Sinha Ji, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. It is a great honor for me to be here with you all to celebrate this milestone, the Diamond Jubilee year of our institution, and it's my proud privilege to thank one and all who have gathered here for this auspicious event. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. I take this opportunity to first and foremost thank God Almighty for His benevolence, which has enabled our institution to reach great heights through these 60 years. On behalf of the entire fraternity of SJCE and JSS STU, we would like to express our gratitude to Reverend Swamiji for the divine presence and blessings. We would like to express our heartfelt gratitude to His Excellency Sri Manoj Sinha Ji, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. His Excellency was kind enough to accept our invitation despite the busy schedule. Presence of His Excellency here on this occasion is a great honor to our institution. Thank you, His Excellency. We thank Sri ST. We express our thanks to Sri Venkat, industrialist from Bangalore, who accompanied His Excellency. Thank you, sir. We thank Sri S.T. Somasekhar, Minister for Cooperation and District in charge, Government of Karnataka, in his absentia. We would like to thank Sri L. Nagendra, MLA, for accepting our invitation and gracing this occasion. I thank Manjay Gowda, MLC, for attending this function. We owe our thanks to Dr. C.J. Betsurmat, Executive Secretary, JSS MEP, Professor M.S. Dhananjaya, Advisor, and Dr. B. Suresh, Director, Technical Education Division, for their valuable presence and guidance in everything we do at SJCE. We thank our Vice Chancellor, Dr. A.N. Santosh Kumar, for his support and guidance. Our sincere thanks to all the officials of JSS Mahavidyapita, JSS AHER and JSS STU for your continuous support and encouragement. We would like to express our gratitude to the principals and faculty of our sister concerned institutions and other institutions in and around Mysuru for gracing this occasion. I express my sincere thanks to Dr. Rajshekhar. Welcome, sir. We thank our former principals, ex-faculty and staff members and all special invitees for joining us in our celebrations this evening. Your presence here made us glad. My sincere thanks to all the heads of the departments, faculty and staff for their enormous cooperation and staff. We would like to thank our beloved alumni, students and proud parents who have come to attend this function. Your presence has added to our joy. Our thanks will not be complete if we do not acknowledge print and electronic media for their presence and giving excellent coverage of the event. Thank you, one and all. Jai Hind. I now request all the dignitaries and audience to rise for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।